अच्छा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो आखिरी चीज़ रहती है दैट इज वॉन वॉल बैंड डिजीज. अच्छा, दिस इज द कॉमनेस्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर. इस तरह का डिसऑर्डर है कि इसमें ओवरलैप होता है बिटवीन द प्राइमरी प्रॉब्लम, द प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस दोनों के दोनों हमें इसमें मिलते हैं. बिकॉज जो वॉन वॉल बैंड फैक्टर है इसने एक फैक्टर 8 को भी होल्ड किया होता है और ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने में भी, अट्रैक्ट कराने में, प्लेट एग्रीगेशन में भी इसका जो है रोल होता है. तो इट मीन्स अगर इस फैक्टर की एबनॉर्मलिटी होगी तो व्हाट वुड हैपन, आपके पास दोनों तरह की ब्लीड की मैनिफेस्टेशंस आएंगी. तो पेशेंट विद कम विद नोज ब्लीड्स, gum bleed, maybe with basal hematoma or hematophasis. ऐसे पेशेंट को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, सिंपल शुरू करें तो ब्लड सीपी के अंदर हमें एचपी कम मिल सकता है बिकॉज द रिकरेंट ब्लीडिंग होती रहती है. व्हाट वुड हैपन टू द प्लेटलेट काउंट, द प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड. ठीक है, और इसके फंक्शन को देखने के लिए हम देखते हैं तो ब्लीडिंग टाइम, बिकॉज द प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज सो ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज्ड. मोस्ट ऑफ ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर के लिए अगर हम देखें, prothrombin time is normal but the activated prothrombin time that is increased because of the qualitative deficiency of factor 8. क्या करते हैं क्या we can confirm these with bone hormone factor levels. अब हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट किस तरह करेंगे. ऐसे पेशेंट में क्या, वी हैव टू एडमिनिस्टर वॉन पाउडर फैक्टर अलॉन्ग विद फैक्टर 8. इफ इट इज नॉट अवेलेबल एज अदर, हमारे पास जो एग्जांपल्स थी, वी कैन गो फॉर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. इफ इट इज नॉट अवेलेबल द होल ब्लड. इसमें प्लेटलेट्स भी पूरे हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे पास वापस आ जाता है. दिस इज ऑल अबाउट the wall band disease. Now about thrombotic disorders. इनमें हमारे पास जो आता है दैट इज वन इज thrombotic, thrombocytopenic. एक्चुअली अगर हम इसी वॉल बैंड फैक्टर जिसके पहले बात कर रहे थे इसको अगर हम देखें, इट एक्चुअली होल्ड्स द प्लेटलेट्स. और टू डू दिस, और दिस actually the wall band factor itself जो है, it is a multimeric molecule. For its activation, it must be lysed into small active form by an enzyme which is called ADAMTS13. जब ADAMTS13 इसको ऐड करती है, it becomes activated. And then it aggregates the platelets, whatever it is. In case अगर इसकी कोई deficiency है तो क्या होगा, multimeric remains multimeric and it holds on to too much of the platelets. Anyway, so there is microangiopathy, there is chaos. तो यही यहाँ पर होता है.
In this condition, thrombotic thrombocytopenic purpura, there are antibodies against this enzyme, जिसकी वजह से जो वॉन वाइड बल फैक्टर है दैट रिमेन्स मल्टीवैलेंट, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, इसकी वजह से माइक्रोएंजियोपैथीज होती है। और यहाँ पे वाइड स्प्रेड जो हमारे पास पॉपुलेशन हो रही है, जो हमारे पास वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग हो रही है, उनमें से मेजर आपके पास जिस तरह से दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, जैसे कि हमारे पास किडनी एंड ब्रेन, इन दोनों में भी देयर इज क्लॉटिंग मेजर। जब हम और यही वो दो फैक्टर है दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। खैर दैट्स अनदर टॉपिक, लेकिन ये है। और हमारे पास जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा जो है, इट्स अ पेंटैड, इसके 5 मैनिफेस्टेशन होती है खास तौर पर। पॉइंट्स कह लीजिए जिनमें हमारे पास कौन कौन से, हमने जिस तरह बात की 5 पॉइंट्स में से माइक्रोएंजियोपैथी होती है, स्मॉल वेसल्स आर इन्वॉल्व, दूसरी हेमोलिटिक एनीमिया, देन जिस तरह हमने कहा कि मेजर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, किडनी चूरिया हो रहा होगा, brain, and last is fever. Now how to investigate such a patient? ऐसे पेशेंट में अगर हम देखेंगे ब्लड सीपी को, that would be decreased. यहाँ पे अगर हम प्लेटलेट्स को देखेंगे that are consumed. और ऐसे पेशेंट में हम जब ऑटो एंटीबॉडीज देखते हैं तो वी कैन फाइंड देम। नाउ हाउ टू ट्रीट सच अ पेशेंट? हमने कहा कि इसमें इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, तो हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? स्टेरॉइड्स। We can always give steroids. लेकिन अगर क्या है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज इंट्रावीनस, और वी कैन गो फॉर द प्लाज्मा एक्सचेंज। But in the long run, steroid की जगह we can use the immunosuppression like rituximab. That's all about the thrombotic thrombocytopenic purpura. Now we move on to other thrombotic disorders. इनमें से हमारे पास आता है disseminated intravascular coagulation, DIC. As the name says, it's widespread intravascular coagulation, और इसका जो सेकंड नेम है यानी कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास एक कॉज होनी चाहिए। That cause will lead to disseminated intravascular coagulation at the level कि आपके पास सारे के सारे platelets, आपके पास सारे के सारे clotting factor, these are consumed, और as a result आपके पास क्या होता है? there is profuse bleeding. So सबसे पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स यूजली आर इन्फेक्शन, सेप्सिस, ट्रॉमा,
amniotic fluid embolism, पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, दोनों तरह की ब्लीड्स के साथ आपके पास आ रहा है. There will be mucosal bleeds and there will be joint and muscle bleed. In the or pre-context में आपके पास कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मौजूद होता है. How will we approach? आप ब्लड सीपी में देखते हैं, the HB is decreased, the platelet these are used up, decreased. What about the clotting profile? आपके पास सारे के सारे the prothrombin time, this is decreased, this is increased. जो आपके पास activated prothrombin time है, that is also increased. D-dimers, जो फाइब्रोइनजेन के ब्रेकअप के बाद जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, these are increased. And fibrinogen itself, because it is used up, it is decreased. So how will we treat this patient with such a gross abnormality of our coagulation system? The rationale is to treat the cause. जैसे कि इन्फेक्शन है, antibiotics, broad super antibiotics, and then whatever is lost we replace it. हम क्या करते हैं? We can give MFPs, we can give platelets, we can give the RCCs, और जिस तरह हम कह सकते हैं replace the whole blood. And IV hydration. And why we do this? Because there is disseminated intravascular coagulation. जब ये हमारे renal system से गुजरेगी, that should not slip over there. That's why we use this. So that's all about the DIC. Now the last one is antiphospholipid syndrome. It's a clinical pathological presentation of a patient, usually a female of reproductive age, who is having some autoimmune disease in the background. What might be like SLE, like rheumatoid arthritis, like Sjogren's syndrome, and she has a bad obstetric history, more than or up to 3 first trimester abortions, and she has any evidence of arterial or venous thromboembolism. So what might be the manifestation of arterial? Like stroke in a young patient, young female. Do think about it, case. DVD. So young patient, 30-35 years of age, having SLE, with frequent more than or up to 3 first trimester abortions, is having a DVT. Do think about this diagnosis. Or the same history, and she is having a stroke. Do think about antiphospholipid syndrome. So how we investigate this case? When we think about it, we suspect that this is a case of antiphospholipid syndrome. We go for antiphospholipid antibodies, which are anti-cardiolipin antibodies, and the second one is lupus anticoagulant. And how we treat this patient? This patient has hypercoagulability, we give the anticoagulants. So in the cases of like the patient has stroke, we offer morphine. And if a patient has venous
thrombosis. We can go for aspirin and heparin. और याद रखें a patient like this who has venous thrombosis DVT है in the background के साथ pregnancy भी है, ऐसे patient में these have very much chances of recurrence of this event. ऐसे पेशेंट में हमें लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेशन करनी पड़ती है. तो that's all about the thrombotic disorders.